Hi everyone and welcome back to another lecture. In the previous lecture, I discussed the introduction part of Plato's ideal state. If you have missed the previous lecture, I'll place the link in the description box below so you can visit the link and you can watch the video and lecture from over there. So I'll skip this introduction part and we'll begin with Plato's ideal state. So, Plato had presented the concept of an ideal state, like why did he felt the need for, for presenting the concept of an ideal state. Like he just wanted to present a model state, like for him, because ideal was the real, क्योंकि the model that Plato has presented, for him that was real. ठीक है, क्योंकि मतलब that this was what the reality should be and this is what we should accept and work for it to achieve our ultimate goals. क्योंकि प्लाटो ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था एक आइडियल स्टेट का एंड ही वांटेड टू अचीव सच मॉडल स्टेट इन रियल टर्म्स, क्योंकि वो चाहते थे कि इतना परफेक्ट स्टेट होना चाहिए दैट इट शुड बिकम अ मॉडल फॉर ऑल टाइम्स. But unfortunately such a state haven't existed ever since human history, क्योंकि ऐसा स्टेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा था, क्योंकि बिकॉज इट वॉज सो मच आइडियलिस्टिक इन नेचर एंड इन रियल टर्म्स जितना भी था ना. तो बिकॉज प्लाटो हैड ऑलवेज प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज इन वेरी आइडियलिस्टिक मैनर एंड ये जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, प्लाटो हैज़ प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ एन आइडियल स्टेट इन हिज फर्स्ट बुक द रिपब्लिक. तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो, फॉर प्लाटो द स्टेट वॉज मेंट टू बी द स्टेट इन रियल टर्म्स. तो इसीलिए फिर इसने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट का वो ये दिया था, थ्योरी दी थी. ठीक है, प्लाटो इज़ नोन टू बी आइडियलिस्ट, जबकि एरिस्टोटल जो इसका स्टूडेंट था ही इज़ नोन टू बी अ रियलिस्ट. तो इन दोनों का हमेशा कंपैरिजन भी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट, दैट प्लाटो इज़ नोन टू बी एन आइडियलिस्ट वाइल एरिस्टोटल, who was the student of Plato, is known to be a very realist. तो जितने भी प्लाटो के काम वर्क थे या रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटमेंट्स, statesmen, all work, theories, philosophies of Plato were very much idealistic in real terms, or because such concepts and theories of Plato were so impractical and illogical, because that can't be implied in real sense. तो ये सारा था that he presented the concept of ideal state in his first book Republic, because Plato did not worry about its practicality, that whether this state would work in actual terms or not, whether this kind of a state would exist in real terms or not. And that was very much based on Hellenic ideas, जिसका जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था आइडियल स्टेट का, दैट वाज पार्टली बेस्ड ऑन हेलेनिक आइडिया. सो दिस वर्ड goes in relation to the Greece people and institution of Greece at that time. It was kind of a model for Greece, solely for Greece basically. So Plato basically drew an analogy between individual and state. Now analogy is kind of a finding a relation between two things, ठीक है, but they are very unlike in kind and terms. Like individual body के जो features हैं physically are different from that of a state, but still Plato is looking for some sort of comparison, like individuals, like humans, they run state. So this is one kind of a feature. Plato is kind of drawing a relation between these two things, के इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टेट चलाते हैं. ठीक है, सो प्लाटो ड्रीव एन एनोलॉजी बिटवीन द ह्यूमन एंड स्टेट, लाइक that's how Plato constructed the concept of an ideal state. ओके, सो प्लाटोज कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट, इसका जो एक फीचर ये भी है कि दैट प्लाटोज concept of an ideal state is also based on Plato's functional specialization. Now the Plato basically gave a concept of functional specialization. According to Plato, he meant that every human body is having some several features, and one of the feature among the human body is dominating. So Plato had highlighted that there are basically three features. There's
हैज़ दिस रीज़न जो कि इंटेलिजेंस या वाइज इन चीज़ों को रेफ़र कर रहा था। अब जो का स्पिरिट है वो जो है ना दैट्स बेसिकली रिलेटिंग टू द करेज एंड ब्रेवरी, एंड जो एपिटाइट है ये जो है ना ये प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। जैसे एक इंसान के अंदर जो एपिटाइट है ना, मतलब उसका स्टमक जो है, तो वो मतलब ही इज़ बेसिकली ड्राइंग एन एनोलॉजी बिटवीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन रिलेशन टू द स्टेट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो कहते हैं कि जिस इंसान में रीज़न डोमिनेट करेगा, मतलब जो इंसान इंटेलिजेंट होगा, तो वो फिलोसोफर किंग होगा, बिकॉज दैट्स वन फीचर विच इज़ डोमिनेटिंग इन हिज पर्सनालिटी। सो दैट पर्सन हैज़ द राइट टू बी द फिलोसोफर किंग, द रूलर, दैट he would constitute to the guardian class, because that's the man who is very intelligent, having that reason dominating in their personality. Now the another person who's having the spirit, he's dominating courage and bravery, so that would belong to the soldier class, the auxiliary class, ठीक है। वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो स्टेट की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेंगे, वो स्टेट को सर्व करेंगे, ठीक है। स्टेट की प्रोटेक्शन इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑक्सिलरी क्लास। नाउ द एपिटेटिव क्लास वो प्रोड्यूसर्स क्लास होगी, ठीक है। वो लेबर्स होंगे, वो आर्टिसियन होगी, वर्किंग क्लास होगी, वो स्टेट का पेट पालेगी। दैट वुड बी सोली कंसर्न टू द बिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो दैट्स हाउ प्लेटो हैड डिवाइडेड द फंक्शंस ऑफ एवरी ह्यूमन इन रिलेशन टू द स्टेट, के किस तरह फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी। दैट पर्सन हु वुड बी हैविंग द फंक्शन स्पेशलाइज, तो इसी तरह इनकी जो वो है ना ड्यूटीज़ वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर द फीचर विच इज़ डोमिनेटिंग इन ह्यूमन बॉडी। Now that Plato's ideal state would have a reflection of such features, like individual having such virtues would build and construct the state. Now Plato had divided the body of human into different parts. Likewise, I have told you before, he divides the functions of the state in relation to the human body. Now this is very much idealistic in nature. His philosophy is totally idealistic, which is impossible to imply, because how can this be implied? How can one can define that one man is having reason, he is dominating reason, how one man is dominating courage? क्या वो तीनों एक साथ भी हो सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, या कुछ भी नहीं हो सकता? और इवन वन इंडिविजुअल कैन डोमिनेट टू फीचर्स इन हिज पर्सनालिटी। नाउ देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पर्सपेक्टिव जो है प्लेटो का, बिकॉज in the end the question is that who would judge and decide that the person is suitable for running the state and the person is suitable for protection of the state, ठीक है। so ये इस तरह था प्लेटो kind of drew this kind of analogy that between the individuals and the state, like ठीक है individual के अंदर जो features हैं उनका comparison किया है था state के साथ प्लेटो ने। Plato's portrayal of an ideal state. Now, it was not the objective of Plato's theory that he was drawing an idealistic concept of state, but a real objective of Plato's ideal state was to achieve good in life, ठीक है। बट अगर हम इसका क्रिटिसिज्म देखें तो ये भी है कि मतलब इट वाज यूटोपियन इन नेचर एंड दैट बेसिकली नेवर एग्जिस्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, बट प्लाटो's portrayal or vignetting of an ideal state can be compared to very much to an artistic portrayal of a landscape, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता है तो ये उसकी मर्ज़ी होती है ना कि पेंटिंग में कुछ भी ला सकता है, लाइक आसमान को ब्लैक कलर कर दे, ज़मीन को वाइट कलर कर दे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। इट्स हिज ओन इमेजिनेशन, ठीक है, एंड क्रिएटिविटी विच कांट बी क्वेश्चनड। एक आर्टिस्ट के टैलेंट को या पेंटिंग को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो सिमिलरली प्लाटोज आइडियल स्टेट वाज अ मॉडल स्टेट अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेजिनेशन, ठीक है, बिकॉज it was according to his own imagination and thinking, but it was later subjected to severe criticism, because an artist is never worried about whether the features he's painting are according to the nature or not. So such was the case with Plato as well, Plato's ideal state, क्योंकि he wasn't worried about the practicality of the state. Plato was also very much
unconcerned about the realization of the actual institution of an ideal state, क्योंकि Plato did not worry whether the state would exist after his theory of an ideal state or not, क्योंकि एक इंसान अपने अंदर जितनी भी perfection ढूंढता है ना, तो that should be reflected in an ideal state. That was what, according to Plato, he thought that if a human is finding 100% perfection in his body, so why not a state can't be perfect in real terms. So that was the basic concept of Plato. तो he just wanted कि मतलब एक इंडिविजुअल अगर अपने अंदर इतनी परफेक्शन ढूंढ रहा है, सो स्टेट शुड ऑल्सो बी एन एंड इन इट सेल्फ, ठीक है. स्टेट्स परफेक्शन शुड बी द अल्टीमेट गोल एंड एम ऑफ द पीपल एंड दे शुड ट्राई टू अचीव दैट, शुड बी एन एंड इन इट सेल्फ, ठीक है. तो ये इस तरह था प्लाटो का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट. अब जो प्लाटो का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, दैट वाज बिल्ट ऑन 3 सक्सेसिव वेव्स, और यू कैन कॉल स्टेप्स और स्टेजेस एज वेल, क्योंकि इन 3 चीज़ों की वजह से दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ प्लाटोज आइडियल स्टेट. नाउ द फर्स्ट पॉइंट अमंग देम वाज दैट men and women are different in degree but not in kind, ठीक है. लाइक दिस दे शुड शेयर सेम एजुकेशन एंड शुड शेयर सेम पब्लिक फंक्शंस, ठीक है. फिर इसके बाद प्लाटो ने जो है ना स्कीम ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, विच वाज अ वेरी कैलकुलेटेड कॉन्सेप्ट. तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन अदर लेक्चर्स, प्लाटोज कॉन्सेप्ट ऑफ या स्कीम ऑफ एजुकेशन. सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो ही वाज ऑफ द व्यू दैट men and women should share same education and public functions, ठीक है. मतलब he was very much a big advocate of women's participation in politics, ठीक है. So the second point is that abolition of family. Plato did the abolition of family through the property of wives and ये communism of property and communism of wives, ये इसकी 2 theories थी. तो ये था that was very much idealistic and अभी तक जो है ना अभी तक ये, and in these 2 points like communism of property and communism of wives, no, there was no fundamental right, ठीक है. There were certain points that Plato's ideal state was lacking, like abnormal babies के साथ क्या होगा. अगर देखें इसमें प्लाटो ने कहा था कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, इसमें कोई भी नो इंडिविजुअल वुड बी हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था प्लाटो के आइडियल स्टेट में. उसने कहा था दैट प्रॉपर्टी वुड बी बिलोंग टू स्टेट वुड बी ओनिंग द होल प्रॉपर्टी, नो इंडिविजुअल वुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है. क्योंकि अगर इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होगी तो वो जो है ना इंडिविजुअल एक ह्यूमन है, वो स्टेट को पूरा फोकस नहीं दे सकेंगे. दे वुड नॉट बी एबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़ फुली, ठीक है. मतलब स्टेट को वो नहीं फोकस करेंगे, ठीक है. तो प्रॉपर्टी सारी स्टेट की होगी एंड दैट्स हाउ द सोल्जर्स वुड बी फाइटिंग फॉर द स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है. अब कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का कॉन्सेप्ट था, प्लाटो ने दिया था, विच इज़ वेरी मच फैलेशियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्लाटो अकॉर्डिंग टू प्लाटो ही वॉज ऑफ द व्यू दैट हेल्दी मर्द मैन को हेल्दी वुमेन के साथ जो है ना बेबीज़ प्रोड्यूस करने होंगे, सो एज़ टू प्रोड्यूस हेल्दी बेबीज़ फॉर द स्टेट, ठीक है. एंड देन स्टेट वुड बी ओनिंग दोज बेबीज़ एंड कोई भी जो है ना वो मदर से लिए जाएंगे एंड नो मदर वुड बी लुकिंग आफ्टर हर बेबी, बिकॉज दैट हाउ दैट शी वोंट बी लुकिंग, फिर वो ठीक से जो है ना स्टेट अफेयर्स या पब्लिक फंक्शंस को फोकस नहीं कर सकेगी, ठीक है. तो बेबीज़ जो है ना वो स्टेट ओन करेगी. तो ये जो थे ना दैट वाज सो मच इम्प्रैक्टिकल एंड इलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स ऑफ प्लाटो कॉन्सेप्ट इन द आइडियल स्टेट, ठीक है. देन अच्छा, जो थर्ड फाउंडेशन था ना प्लाटो की आइडियल स्टेट का, वो था द रूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है. प्लाटो वाज अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ द रूल ऑफ अ फिलोसोफर किंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम knowledge is virtue, ठीक है. एंड प्लाटो एंड द फिलोसोफर किंग इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल. ओनली फिलोसोफर किंग हैज़ द राइट टू रूल द स्टेट, ठीक है. क्योंकि द सैल्वेशन ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट बाय द फिलोसोफर किंग. इसी तरह एक सोसाइटी की फ्रीडम होगी, ठीक है. सो फिलोसोफर रूलर्स जो थे ना, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग बिकॉज प्लाटो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अ फिलोसोफर किंग. ही वुड बी द रूलर
and he would be the king. So freedom of a society depends solely upon the rule of a philosopher king. He would be the head of the state and that reason would dominate. तो जो फिलोसोफर किंग का जो वर्चू है ना, दैट्स रीज़न, ठीक है। तो ये जो था ना, प्लाटो का जो कॉन्सेप्ट, ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स था ना, ये दैट वुड बी ओनली फॉर द अपर क्लास, ठीक है। अपर क्लास में क्या थी, गार्डियन क्लास थी एंड द ऑक्सिलरी क्लास थी। ही बेसिकली निग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड द थर्ड क्लास विच वॉज द मिडल क्लास, द पुअर क्लास, ठीक है, द वर्किंग क्लास, जो लेबर्स थे प्लाटो के आइडियल स्टेट में। So, this marks the end of this lecture. I'll be evaluating this theory in another lecture, which would be part 3. I hope you liked the video. If you did, please give it a thumbs up. And till then, take care. Bye.